Welcome back everyone. In this video, we will be learning about HTML forms. HTML forms we can use, let's say, for designing user login registration page, feedback forms, contact forms, and etc. If you want to receive user information in your web page, we can simply use HTML forms. So let's start this video and let's see how we can use HTML forms. First, let's understand that what do we mean by HTML forms. HTML form is a part of a document used to collect and store user information or data. Let's say you are designing a website and in that website you need to collect user feedbacks. So very easily you can collect such data with the help of HTML forms. In HTML forms used to collect and store user information. The collected information is often sent to the server for processing. Forms can contain the input elements like input text boxes, input text areas, labels, checkboxes, radio buttons, submit button, etc. Now what do we mean by third point? When we are going to use form element, this form elements will provide you different input element. Let's say आपको user का name यूजर से कलेक्ट करना है. फॉर दैट वी कैन यूज इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्सेस. लेट्स से आपको यूजर की ईमेल आईडी को कलेक्ट करना है. फॉर दैट वी कैन यूज इनपुट type is equal to email. So different input elements will be provided to you when you are going to design a user registration or a login form. So the form can contain different elements for collecting username, password, email ID, date of birth, checkbox, radio buttons, etc. Let's say this form will provide you an input element named as radio buttons. If you want your user to select the gender, okay, कि हम एक registration form बना रहे हैं और उस registration form में we need to collect user gender information. So we are going to provide three options: male, female, or others. Now when we are going to use radio button, when we want to collect only a single piece of information, उस radio button को बनाने के लिए form element आपको एक input element provide करेगा. उस input element में आप कौन सा type use करोगे? Radio button. So the form can contain different elements for collecting different data. HTML forms can be created by using form tag. Okay, if you want to design a feedback form, contact us form, login registration form, very easily you can use this form tag. Let me show you a quick example of it. The moment when you write this piece of code in an HTML file, you will be going to have this output. So here you can see, in order to design this login page, we are going to use form tag. यहाँ पर हम यूजर से यूजर नेम पूछेंगे, ईमेल आईडी रिसीव करेंगे और यहीं पर हम एक बटन बना रहे हैं और उस बटन पे हमने क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है? सबमिट. So how we can create this form? Very easily with the help of form tag we can create such things. तो यहाँ पर अगर आप कोडिंग को देखोगे तो फॉर्म टैग हमने ओपन किया हुआ है. इस यूजर नेम के लिए हमने लेबल यूज किया हुआ है और यूजर से इनपुट रिसीव करने के लिए फॉर्म टैग आपको इनपुट एलिमेंट प्रोवाइड करेगा जिसका टाइप आपके प्रोग्रामिंग नीड पे डिपेंड करता है. अगर आपको यूजर से टेक्स्ट लेना है तो वी विल बी यूजिंग इनपुट टाइप टेक्स्ट. अगर आपको यूजर की ईमेल आईडी चाहिए वी विल बी यूजिंग इनपुट टाइप ईमेल. और अगर आपको एक बटन बनाना है देन वी विल बी यूजिंग इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट. So this is how we can use form in HTML. Now here we are going to discuss about HTML form attributes. So when you are going to use forms, you are going to deal with different attributes. One of the most important attribute is action. It defines the action to be performed when the form is submitted. This action you will be using when you are going to learn about backend.
मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि एक्शन एट्रीब्यूट को हम कब यूज करेंगे। लेट्स से आपने यूजर के लिए एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया। यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को उस रजिस्ट्रेशन पेज में फिल करेगा। नाउ द मोमेंट व्हेन ही और शी क्लिक्स ऑन बटन सेव और when he or she clicks on button submit, definitely we need to save that information on some database। डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे और वहां पर हम इस यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव कर देंगे। तब आप यहां पर यूज करोगे एक्शन एट्रीब्यूट का। Okay, so action defines the actions to be performed when the form is submitted. Then the next attribute is method. It defines the HTTP method to be used while submitting the form. Again, this method you will be using when you are going to learn backend. जब आप अपने HTML फॉर्म को किसी बैकएंड प्रोग्रामिंग से कनेक्ट करोगे, we can use PHP, we can use Django, we can use Java for it, then we will be using this attribute named as method. अब मेथड के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि there are two types of methods, get and post. Okay, and you should be very clear about get and post. It's a common interview question as well, that which method you can use, what is the difference between get and post. So HTML provides you two methods, get and post, using which you can save your information, or these methods define how your information will be submitted. So let's talk about get, because get is the by default HTTP method. जब आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे और जैसे ही यूजर सेव या सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, which method will be invoked automatically? This get method. Now what do we mean by get method? After submission of form values will be visible in the address bar of the browser tab. So for sending sensitive information, the get method should not be used. ओके, तो गेट एक बाय डिफॉल्ट मेथड है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, ये आपको डेटा को, ओके, ये आपके यूजर के डेटा को फर्दर सबमिशन के लिए भेज देगा। बट गेट मेथड का एक ड्रॉबैक क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करेगा, दैट विल बी डिस्प्लेड इन एन एड्रेस बार। मैं अभी आपको ये प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा। Length of the URL is limited in get method. Form submission with get method can be bookmarked. Okay, then we have another method named as post. Okay, so once you become a web developer, you are going to use this post method a lot. After submitting the form, the values will not be visible in the address bar. मैंने आपको बताया कि get method में यूजर जितनी भी इंफॉर्मेशन को फिल करेगा वो एड्रेस बार में डिस्प्ले होगी। It will be visible in the address bar. So get method is not recommended in order to store sensitive information. Let's say आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको यूजर के डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए। So we never want that debit card information to be displayed in an address bar. So for sensitive information, please do not use get method. We can use post instead. Okay, because after submitting the form with the help of post method, the values will not be visible in the address bar. There is no size limitation. Large amount of data can be sent. Form submissions with post method cannot be bookmarked. So this is the difference between your get and post method. अब मैं आपको ना प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि get method किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एड्रेस बार में विजिबल करता है और पोस्ट उसको किस तरीके से हाइड करता है। So here I am taking an example of W3 school website. यहाँ पे we are using form tag. इधर हमने दो attribute use किए हुए, action and method. Action means where this information will be saved. This information will be saved in action page.php. And as of now you can see that we are using this method named as get. Now what's the drawback of get method? आप address bar को carefully observe करना। The moment when I fill this information, let's say first name Yash, last name Sharma, and the moment when I click on submit, you can see that whatever information you are going to fill, it is visible in address bar. Okay, हमारा डेटा सेव हो गया action.php में, but get method का ड्रॉबैक क्या है
कि यहाँ पर यूजर की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देगा। ओके अब लेट्स से कि यहाँ पर हम यूजर से एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सपोज इनपुट टाइप पासवर्ड, इवन दैट इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड इन एड्रेस बार। ओके सो गेट रिक्वेस्ट गेट मेथड में क्या होता है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एड्रेस बार में विजिबल हो जाती है। इफ आई चेंज दिस मेथड फ्रॉम गेट टू पोस्ट, ओके लेट्स मैंने यहाँ पर मेथड चेंज कर दिया पोस्ट, लेट मी रन दिस। Okay, now I'm going to save this information Yash Sharma, and the moment when I click on submit, you can see this time information will not be visible in an address bar. Okay, so form by default कौन सा method use करता है? Get. Okay, so if you are getting or if you are going to receive a sensitive information from a user, please do not use get method. Now we have some more HTML form attribute. We have target. It defines the place where the response, means where you are going to receive the information after submitting the form. So in target we have these values: blank, it will be displayed in a new tab; self, this will display the information in current window; parent will display the information in parent frame; and top will display the information at full body of the window. So target is one of the attribute which we can use in form tab. Then the next we have autocomplete. It defines whether the form should have autocomplete on or off. Okay, if we are going to use it as on, browser automatically complete value based on previous input. And if you are going to use autocomplete off, browser will not support autocomplete functionality. ये ऑटो कंप्लीट फंक्शनैलिटी क्या होती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पे आके रजिस्टर किया, नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा सपोज कि आप कोई और यूजर मेरे लैपटॉप पे आके आपकी साइट में रजिस्टर कर रहा है, तो जैसे ही वो नेम पे डालेगा तो उसको मेरा नाम डिस्प्ले हो जाएगा। So autocomplete on, browser automatically complete value based on previous input. Off, browser will not support autocomplete functionality. So you can use this attribute autocomplete and you can define either on or off. Now the next important part of HTML form tag is input element. अब ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, because input element plays a very important role in HTML form. The input element is used to get input from the user. The input element can be displayed in many ways depending on the type attribute. अब सपोज करो कि आपको यूजर का नेम रिसीव करना है, सो यू विल बी यूजिंग इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। आपको यूजर का ईमेल एड्रेस चाहिए, तो वी कैन यूज इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। If you want to create a button, then you can create input type submit for submitting a form, and if you want to create a clickable button, then we can create input type is equal to button. If you want to use radio buttons, I already told you that we are going to use radio button to select one of multiple options. Let's take an example कि आपको यूजर के जेंडर की इंफॉर्मेशन चाहिए। So at this point of time, we will be using this radio button so that user can select one of the option. Either user can be a male, female or other. Then we will be using input type checkbox. This control we will be using to select multiple options. Let's say आपको user की qualifications पूछनी है और आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऑप्शन दे दिया 10th, 12th, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, एंड नाउ यू वांट योर यूजर टू सिलेक्ट ऑल द ऑप्शन और टू सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन, वी कैन यूज चेक बॉक्स। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं तो मैं सारे ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा 10th, 12th, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। अगर मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करी तो मैं कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा 10th, 12th और ग्रेजुएट। सो इफ यू वांट टू get multiple information or if you want your user to select one or multiple options, we can use checkbox, क्योंकि रेडियो में यूजर एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है, चेकबॉक्स में यूजर मल्टीपल ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकता है। Now if you are going to receive the date of birth information from your user, you can use input type is equal to date,
And if you are getting the contact number, then you can use input type is equal to number. आपको age की information user से चाहिए, so we can use input type is equal to number. It will guarantee that it will accept only a specific set of numbers. So these are the input elements which we will be learning very soon using a practical approach. Now these input elements can have an attribute as well. Let me show you those attributes. So you can have these input element attributes along with input type text, input type email or other options. So the first attribute is class. It is used to define the name of the class, ID, which represent unique ID of the element. Then you can give a name to your HTML form controls. You can use placeholder. You can use required. Now one of the most important attribute is required. If you are going to write required in input type text or in input type email, it will make that field mandatory. Means user को वो information भरनी ही पड़ेगी. User cannot click on button submit until and unless he or she will fill that information. So required एक बहुत ही important attribute है. वो field जिसमें आप चाहते हो कि यूजर इनपुट दे, वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं इस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का. ओके, लेट्स से यूजर का एड्रेस एक ऑप्शनल है, बट यूजर का नेम, उसकी एज और उसका ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेम, ईमेल आईडी और उसके एड्रेस में या उसके कॉन्टैक्ट नंबर में हम लगा सकते हैं रिक्वायर्ड फील्ड. अगर एड्रेस आप चाहते हो कि ऑप्शनल है, यूजर भरे या ना भरे, सो वी कैनॉट यूज, वी डोंट need to use this required attribute. Then we have the type attribute. इस type attribute में आप different input field user के लिए बना सकते हो. We have text, we have number, we have email, we have button. So one by one we are going to understand everything practically. Now before I take you to the practical part, I would like to show you some examples. So let's say very soon we are now going to start designing this static LinkedIn page, और इस static LinkedIn page में we are definitely going to use HTML form tag. Okay, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है search. Here we need to receive user input. In order to design this particular area, we can use input type is equal to text. अब यूजर को लेट्स से कोई पोस्ट लिखना है. Okay, so in order to start a post or in order to enable user to write a post, we again going to use input type is equal to text. Okay, so guys, हमारे static LinkedIn project में भी हम use करेंगे HTML input elements का. Now here I would like to give you an overview of some form elements and then I'll show you the practical example of it. Text area. The text area is a multiple line text input field. Now when you can use text area, let's say you are going to receive user address information. अब यूजर का एड्रेस एक दो लाइन में भी हो सकता है, so we can use text area. Let's say you are receiving a feedback from a user. अब डेफिनेटली कुछ यूजर्स दो तीन लाइन का फीडबैक लिख सकते हैं, कुछ यूजर पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं और कुछ यूजर सिर्फ कुछ ही वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. So we can use text area. The text area is a multiple line text input field. The text area is often used in a form to collect user information like comments, messages, reviews, address, etc. Example, if you are going to write this piece of code, text area, rows is equal to 5, columns is equal to 50, name is equal to description, then you will be going to have a large area where user can insert an information or a description very easily. The attribute rows and columns are used to specify the size of the text area. Okay, very soon practically we are going to understand how we can use this rows and columns attribute. Okay, then we have label. Okay, label defines what to be entered in the input fields. Okay, we cannot create or we cannot use input type text directly. We need to specify that what kind of an information user need to be entered. अगर आप ये नहीं बताओगे कि यहाँ पर आपको नेम लिखना है, इस एरिया में आपको ईमेल डालना है, इस एरिया में आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, तो यूजर विल गेट कंफ्यूज्ड. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन वी यूज लेबल्स, because label defines what to be entered in the input fields.
Labels are optional in forms. It totally depends on you. If you want to use them, feel free to use it. Okay, example. This is how we are going to use label. Let's say you are going to receive a username. So you can use label for username and you can write this username text in your label. Now where this information will be displayed in final HTML form, this username will be displayed, and next below it we are going to have an area where user can insert his or her information. And here the attribute for is used to define for which input field this label is used. Then we are going to use button as well. The button tag defines the clickable button. The button tag also has the type and class attribute, which is the same as the input tag. Example, if you want your user to click on one button after submitting or after filling out the form, very easily you can use this button tag. So you will be writing this piece of code, button type is equal to button on click alert hello world click me. Now here, the moment when user click on click me, this alert box will be generated. Okay, so the button tag defines the clickable. Now here the attribute on click defines what should happen on the click of a button. Usually it is used to called JavaScript functions. Later on we are going to understand this on click attribute in our JavaScript. As of now, don't get confused. It's very easy to understand. जैसे ही आप click me बटन पे क्लिक करोगे कि alert box आपको generate होकर दिखाई दे जाएगा और उस alert box में क्या लिखा हुआ होगा, hello world. So these are the different HTML form elements which we can use in order to design an HTML form. Now guys, we are done with theoretical part. Let's practically understand that how we can use this HTML form. ये बहुत ही interesting topic है और बहुत important topic भी है, because whenever you are going to design a web page, you are going to create either a user login registration page, feedback form, comment section, or you can create a form in contact us. Suppose I want to contact you. Okay, so I can give you my information and you can reach to me. So that kind of information, if you want to receive this kind of an information from a user, we are going to use HTML forms. अब practically देखते हैं कि कैसे हम इस HTML form को use कर सकते हैं, and we are going to design a very cool registration or a user registration page. So let's start. So guys, here in Visual Studio Code, I have created this HTML forms.html file. ये फाइल आप लोग भी बना लो अपने Visual Studio Code में, and here we are going to understand the concept of HTML forms. तो यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ. Here we are going to learn about HTML forms. So this will be my title, HTML forms. और यहाँ पर body tag में I am going to use an h2 tag. और यहाँ पर एक heading दे देते हैं. We are going to design user registration page, okay, or user registration form. Okay, after this here I am going to create one horizontal row, so a line will be generated, and here I will be using br tag. अब सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि what kind of information you need to receive first, and for that we can use label. Okay, labels are totally optional. Okay, if you don't want to use label, आप यहाँ पे directly भी लिख सकते हो, enter your first name. Okay, here you can write enter your first name, and directly you can use input type text. Okay, तो अभी फिलहाल मेरे को यूजर का नेम रिसीव करना है, so here I am going to use input type is equal to text. Now what will happen if I save this and if I show you this page in browser? This is how it will look. Okay, so we are going to have this heading, user registration form. HR will going to generate this line for you. Okay, here you will be going to have a text, enter your first name, and here input type is equal to text will help you to receive user input. Okay, तो आपको अगर यहाँ पर लेबल यूज करना है तो आप यहाँ पर लेबल भी यूज कर सकते हैं.
Okay, in this particular demo, I will be just simply writing up the text. Later on in our project or when we are going to design a full-fledged web application, then we will be using label. मैं आपको उसका भी फिलहाल एक आइडिया देता हूँ कि if you want to use label, then you can use this attribute label. Okay, यहाँ से आप इस label को हटा दो. Okay, we can cut it from here and we need to paste. Okay, and here you can use an attribute named as for. Okay, यहाँ पर आप एक attribute use कर सकते हो label for. Label for means why you are creating this label or for what purpose you are creating this label. So यहाँ पर आप for में लिख सकते हो that we are going to receive first name. Okay, so this is going to be your syntax if you want to use labels in HTML form. Save करते हैं. यहाँ पर इसको मैं refresh करता हूँ. So this is how your labels will be displayed to you. Okay, so guys, it totally depends on you. If you want to use a label, feel free to use label. और अगर आपको directly information लिखनी है, enter your first name without using label. So you can write this piece of code. Okay, both will going to give you the same output. Okay, so enter your first name. Okay, now this form tag. Okay, first of all, here we have done a simple mistake that whenever you are going to take user input and before you start using this input type text, you have to use this tag named as form. Okay, always use this tag first. Okay, form tag you need to use. Okay, and now here you can write your information. Enter your first name. Okay, or I'll directly enter your name. Okay, now what kind of input you want? Okay, I showed you a slide जहाँ पर input के मैंने आपको different type दिखाए थे. सबसे सिंपल जो टाइप है वो है आपका टेक्स्ट. अगर आपको यूजर का सिर्फ एक नेम ही रिसीव करना है, ओके, सो वेरी इजीली वी कैन यूज इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. If I save it and now if I refresh it, here we are going to have this text, enter your name, and we got this area where a user can insert his or her name. So simple text अगर आपको अपने यूजर से रिसीव करना है, so you can use input type is equal to text. Let's say if you want to receive an email ID. Okay, आपको यूजर से एक ईमेल रिसीव करना है. Enter your email. Here guys we can use input type is equal to email. Okay, यहाँ पर अब हम क्या यूज कर सकते हैं, इधर हम यूज कर सकते हैं input type is equal to email. Later on we can use this input type email for validation purposes. कि यूजर करेक्ट email address डाल रहा है या wrong email address डाल रहा है. So it is recommended whenever you are going to receive email information, use input type is equal to email. Let me refresh the page and here you will be going to have an area and here we can receive an email address of our user. Okay, now let's say if you want to receive contact number. Okay, so again I will be using to be a tag. Okay, enter your contact number. Okay, here guys, if you want to get only numeric information, okay, क्योंकि numbers ज़्यादातर numeric में ही होते हैं, so you can use this input type is equal to number. Okay, input type is equal to number you can use. Let me save it, and if I refresh the page, you will be going to have enter your contact number. And guys, now if I try to write some string value over there, see, nothing is happening. Okay, आप भी अपने कीबोर्ड में कुछ स्पेसिफिक कीज प्रेस करके देखो, Q, A, B, C, D, E, nothing will happen. But the moment when you type integer values, it will receive integer values very easily. So this is the benefit of using input type is equal to number. एज के लिए आप यूज कर सकते हो इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर. रोल नंबर्स अगर आपके इंटीजर्स में हैं या कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेट्स से आधार कार्ड नंबर्स, ये भी इंटीजर्स में होते हैं, तो हियर वी कैन यूज इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर. ओके, सो 3 इनपुट टाइप we have understood: text, email and number.
यहाँ पर अब आप इस वीडियो को पॉज करो, इतने कोड को एग्जीक्यूट करो एंड हियर ट्राई टू insert some string values. Okay, it won't allow you to add or to insert string values because here we are using input type is equal to number. Now guys, after this we are going to receive, let's say, gender information. So again I am using BR tab. Okay, here I am going to write select your gender. So guys, your user can either be a male, female or other. So we are going to provide three options to our user and our user can select only one. Now for that we can use input type is equal to radio. Okay, तो यहाँ पर आप रेडियो बटन्स बना सकते हो क्योंकि रेडियो बटन्स में यूजर सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है. Okay, so here I will be using input type is equal to radio this time. Okay, because I want my user to select only one of the option. Okay, यहाँ पर let's say मैं लिख देता हूँ male. Okay, here I am going to write male. Then I am going to use another input type is equal to radio. यहाँ पर हम एक option देते हैं female का. Okay, and here we are going to use one more input type is equal to radio. और इधर हम डाल देते हैं others. Okay, now if I save this page and if I refresh, you will be going to have a radio button, male, female or others. But यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है. जैसे ही मैं इन रेडियो बटन्स पे क्लिक करूंगा, you can see that I can select every option. Okay, but we know either a gender can be a male, female or it can be other. But यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों ही ऑप्शन यूजर सिलेक्ट कर पा रहा है. Okay, now in order to avoid this we need to group them together. Okay, यहाँ पर हमको इन सभी इनपुट टाइप रेडियो को एक ग्रुप में डालना पड़ेगा. और ग्रुप में डालने का बेनिफिट क्या है? ग्रुप में डालते ही यूजर सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएगा. अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको ग्रुप में कैसे डालें. So in order to keep all these radio button in a same group, आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा और उस एट्रीब्यूट का नाम है नेम. ओके, यहाँ पर अब आप एक नेम डाल दो जेंडर. ओके, इसको भी आप एक सेम नेम दे दो जेंडर और यहाँ पर इसको भी आप एक सेम नेम दे दो जेंडर. जब आप सेम एट्रीब्यूट यूज करोगे नेम और इसके अंदर अगर आप सेम वैल्यू डालोगे तो इट मींस दैट यू आर कीपिंग देम इन अ सेम ग्रुप. अब इसका बेनिफिट क्या है? इट्स बेनिफिट इज क्वाइट सिंपल. लेट मी रिफ्रेश द पेज. अब आप देख सकते हो कि यूजर सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने रेडियो बटन्स को एक सेम ग्रुप में डाल दिया है. So guys, I hope it is clear that when we can use radio, if you want your user to select only one option, then you can use this radio button. अब अगर आप चाहते हो कि यूजर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर पाए, ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू यूज वन इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स. ओके, अब हम यहाँ पर कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे? हियर वी आर गोइंग टू यूज इनपुट टाइप इज इक्वल टू checkbox. So let's say here I'm going to write select your qualification. Okay, अब यहाँ पर मैं यूजर को मल्टीपल ऑप्शन दे सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पे डाला इनपुट टाइप इज इक्वल टू checkbox. Okay, और यहाँ पे मैंने लिख दिया let's say 10th. Okay, then here I'm going to use one more input type is equal to checkbox. Okay, इधर मैंने लिख दिया let's say 12th. input type is equal to checkbox और यहाँ पर हम लिख देते हैं graduate. input type is equal to checkbox और यहाँ हम लिख देते हैं post graduate. Okay, so if I save it, okay, and now if I refresh the page, here you can see a checkbox control will be created. Okay, और checkbox का क्या benefit है कि user can select multiple option over there. अगर आपका user सिर्फ graduate है तो he or she will select 10th, 12th and graduate. अगर वो सिर्फ 10th और 12th पास है तो he
or she will going to select 10th or 12th. और अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी हुई है then he or she can select all the options. ओके यहाँ पर आप और भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हो, पीएचडी, डिप्लोमा, जो भी आपको रेलेवेंट ऑप्शन लगे. So guys, I hope that the difference has been clear between radio button and between checkbox. Checkbox you will be using if you want your user to select multiple options. So guys, अब मैं यहाँ पर आपको एक और नए एलिमेंट के बारे में बताता हूँ, and the name of that element is select. In HTML form element, we are going to use select as well. Now the select element is used to create a drop down list. Okay, how? I'll show it to you. Let's say here I'm going to write some piece of text, select your city. Okay, and here guys I'm going to use this select. Okay, first of all मैं यहाँ पर इसको एक name दे देता हूँ, city. Okay, so first of all select करेगा क्या? Select will going to create a drop down list for you. अब इस drop down list में अगर आपको कुछ items insert कराने हैं, so you are going to use this element named as option. Okay, यहाँ पर आप एक attribute use करोगे value. Okay, और value में आप लिख सकते हो daily. ओके और यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेली. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डेली एंड दिस डेली? गाइस, दिस वैल्यू विल कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट दिस फॉर्म विद डेटाबेस. क्योंकि डेटाबेस में आपकी ये वाली वैल्यू नहीं जाएगी, डेटाबेस की टेबल में आपकी ये वाली वैल्यू जाएगी. So the moment when you are going to design a registration page and you want to save that information in backend database or in a backend server, we can use this attribute named as value. Okay, अब यही same value attribute आपको checkbox में भी use करनी पड़ेगी और आपको इस radio button में भी use करनी पड़ेगी if you are going to connect this form with the backend. Okay, so this value attribute will play an important role when we connect this form with the database. क्योंकि database में ये वाली value नहीं जाएगी, database में आपकी ये वाली value जाएगी जो आप इस value attribute में specify करोगे. So let me copy this multiple option. Let's provide multiple option to user. Okay, here I am going to write it say Mumbai. Okay, यहाँ पर एक text लिख देते हैं Mumbai. Okay, here we are going to use Bangalore. Okay, here you can remove this and you can write Bangalore. Okay, here we are going to change the value. Let's provide another option to our user. Let's say Jaipur, and here I am going to write Jaipur. So now guys, what will be the benefit of the select control and what these options will do? I'll show it to you. Let me refresh the page, and guys, here you can see a drop down effect has been created for you. Okay, so अब यहाँ पर user अपनी desired city select कर सकता है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और जयपुर. Okay, तो कोई भी information अब आप यहाँ पे select कर सकते हो. So guys, what select will do? Select is used to create a drop down list for you. Now guys, in this registration form we will be using some more HTML form elements. Let's say we are now going to discuss about input type is equal to date. अभी input type is equal to date आप कब use कर सकते हो? When you want to receive date kind of an information. Let's take an example. Here I am going to write date of birth. Okay, and here I will be doing what? I will be using input type is equal to date. Okay, I will be using this input type is equal to date. Now what this input type is equal to date will do? Let me refresh the page, and guys, here you can see a calendar kind of an icon will be there for your user. Okay, and from this calendar a user can select his or her desired date of birth. Okay, so you can see that every controls will be there. I'll select mine, 1992 September 24, and you can see. Okay, so this is how a user can select his or her date of birth.
Okay, so guys, whenever you want to receive an information, let's say date of joining, when you are going to book a ticket, you can use this input type is equal to date. Now guys, in this input type date, we have two important attribute और उन attributes का name है minimum और maximum. Suppose you are designing a web page or a website like Book My Show or train reservation, flight reservation. So guys, can we book a flight ticket for the past date? Okay, no. Okay, let's say today is 22 of January. So can I book ticket for 21st of January? No, because this date is already been passed. अब सपोज करो कि आप बुकिंग काइंड ऑफ अ वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप अपने यूजर को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो पिछली डेट को सिलेक्ट ना कर पाए. Okay, because if someone is going to book ticket for old dates, it is not possible. ओके, सो तब यहाँ पर आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम. मैं आपको उनका एक ओवरव्यू यहाँ पर छोटा सा देता हूँ. लेट्स से द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज मिनिमम. ओके, मिनिमम. अब लेट अस से इस मिनिमम एट्रीब्यूट में आप एक मिनिमम डेट फिक्स कर सकते हो. यूजर कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट डेट. सो लेट्स से 2022. Okay, then you need to write month. Let's say the month is 1 and the date will be, let's say, 23. Now what this minimum attribute will do, listen to me very carefully and focus on my screen. अभी फिलहाल आप देख सकते हो. Let me remove this. ओके, पहले मैं आपको विदाउट इसका डेमो दिखाता हूँ. अभी हम कोई सी भी डेट सिलेक्ट कर पा रहे हैं. ओके, हम 2022, हम 2019 में भी जा सकते हैं, हम 2017 में भी जा सकते हैं. देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन. अब सपोज करो कि आप एक फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रेन रिजर्वेशन और बुक माई शो जैसी एप्लीकेशन बना रहे हो. इज इट पॉसिबल कि मैं 2020 की डेट बुक कर? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. Here you can use this attribute named as minimum. अब इस minimum का क्या benefit है? Let me save it. Okay, let me save this. And if I refresh the page and if I click on this calendar icon, so guys, अब आप देख सकते हो कि मैं 23 से पीछे नहीं जा सकता. Okay, हमने यहाँ पे क्या restriction लगाई है? 23rd of January 2022. That means I cannot select 20, even I cannot go on 2021 or on 2019. ओके, तो आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ये मिनिमम आपके डेट में. ओके, मैक्सिमम का क्या बेनिफिट है कि लेट अस से अगर आप यूज करते मैक्सिमम का 2022 मंथ मैंने लिख दिया 1 और लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया 31st. ओके, सो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दिस मैक्सिमम? लेट मी सेव इट. रिफ्रेश द पेज. अब मैं यहाँ फैब की टिकट बुक नहीं कर सकता. मैं सिर्फ कितनी डेट्स के लिए टिकट बुक कर सकता हूँ? 27, 28, 29, 30 एंड 31. ओके, वी कैन नॉट सिलेक्ट दिस फर्स्ट, वी कैन नॉट गो अप, वी कैन नॉट गो डाउन, क्योंकि यहाँ पर आपने एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी है कि अभी फिलहाल हमारे पास जो टिकट्स अवेलेबल हैं वो है आज के लिए 28, 29, 30 and 31. Okay, so guys, always keep these two attributes in your mind if you are going to use this input type is equal to date control. और स्पेशली आप इस मिनिमम और मैक्सिमम को तब ज्यादा यूज करोगे if you are going to design some reservation kind of an application. Okay, let's pause this video and play with this attribute. Definitely you are going to enjoy it. Okay, अभी फिलहाल मैं यहाँ से इन कंट्रोल्स को हटा रहा हूँ because a user can select his or her date of birth. तो यहाँ पर कोई restriction नहीं है. ओके, हालांकि आप यहाँ पर भी एक मैक्सिमम की रजिस्ट्रेशन लगा सकते हो कि मैक्सिमम यूजर 2012 या 2018 तक ओल्डर होना ही चाहिए. कोई 2019 का है, कोई 2020 का है, 21 का है. अगर आप नहीं चाहते यूजर से वो डेट ऑफ बर्थ रिसीव करना, सो यू कैन यूज दिस मैक्सिमम एट्रीब्यूट. Okay, as of now I'm just simply using this input type is equal to date. Clear? Now let's say after this we are okay, after this date of birth attribute here, now we are going to receive username and the password information.
ओके, लेट्स से यूजर ने ये इंफॉर्मेशन अपनी फिल कर दी। अब मैं चाहता हूं कि यूजर अपना कोई यूजर नेम सिलेक्ट करे और कोई पासवर्ड अपना सिलेक्ट कर ले। सो हियर आई एम गोइंग टू यूज एंटर और लेट्स से चूज अ यूजर नेम, चूज अ यूजर नेम, और यहाँ पर मैं एक सिंपल इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो यूजर यहाँ पर अपना कोई भी यूजर नेम सेलेक्ट कर सकता है, और यहीं पर हम यूजर को पासवर्ड चूज करने के भी प्रिविलेजेस दे देते हैं। लेट्स से चूज अ पासवर्ड और लेट्स से एंटर एनी पासवर्ड। Now guys, here we are going to use something known as input type is equal to password. ओके, अभी इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड आप लोग यूज कर सकते हो फॉर गेटिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ यूजर। लेट्स से आप यूजर से क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, उसका पासवर्ड आप रिसीव कर रहे हो। सो फॉर दैट यू कैन यूज इनपुट टाइप इज इक्वल टू password. Now what's the benefit of input type is equal to password? Here whatever your user is going to write that will be masked automatically. Okay, जो भी यूजर यहाँ पर पासवर्ड डालेगा that will not be visible. सो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लगती है उसके लिए आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। ओके, इट विल मास्क ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच यूजर इज गोइंग टू एंटर। मास्किंग का मतलब कि यहाँ पर अब आपको ये बुलेट सिंबल नजर आएंगे, आपको ये नजर नहीं आएगा कि आपका यूजर क्या लिख रहा है। Okay, now finally we can create one button. So I will be using 2BR tag और यहाँ पर अब हम बना देते हैं एक बटन। बटन बनाने के लिए आपको इधर यूज करना पड़ेगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। यहाँ पर आप बटन पे क्या वैल्यू लिखना चाहते हो वो आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी इस वैल्यू एट्रीब्यूट में। तो यहाँ पर गाइस आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो आपके बटन पे नजर आएगी। लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू राइट क्लिक here to register. Okay, and if I save it, first of all what this input type is equal to submit will do, it will create a button for us and this text will be written on our button. Click here to register. Okay, click here to register. So guys, this is how we can use HTML forms in order to design user registration form, user login form, feedback form and even contact us form. Okay, अब फाइनली यहाँ पर मैं आपको कुछ और कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। लेट्स से आफ्टर दिस डेट ऑफ बर्थ आई विल बी यूजिंग टू BR। ओके, और इस BR के बीच में वी आर गोइंग टू यूज टेक्स्ट एरिया। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट एरिया वी कैन यूज इफ यू वांट टू receive some large information from your user or a multiple line information from your user. Let's say address, कुछ description अगर आपको आपके user से चाहिए, you can use this text area. Okay, so इस text area में आपके दो important attribute होते हैं rows. Okay, मैंने यहाँ पर लिख दिया let's say rows is equal to 3. Okay, और यहाँ पर एक और important attribute होता है वो होता है आपका columns. columns मैंने यहाँ पे डाल दिया 10. Okay, and now you don't need to write anything over here. If I save it, okay, and if I refresh the page, a text area will be created for you. Okay, अब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा टेक्स्ट एरिया रोज इज इक्वल टू 5, अभी फिलहाल ये आपको ऐसे नजर आ रहा है। द मोमेंट व्हेन आई रिफ्रेश ये आपको थोड़ा सा और एक्सपैंडेड नजर आ जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर डालोगे लेट्स से कॉल्स इज इक्वल टू 50, then what will happen? Save it, refresh the page, then this input type or text area will be created for you. Okay, यहाँ पर अब आप एक description लिख सकते हो। Let's say here in text area I can write a description about yourself.
Okay, here I can write a description about yourself. The moment when I refresh, a complete message will be displayed to our user. अब आपको ये text area एक नए line में चाहिए, तो after this you can use some BR. Okay, let's save it. And if I refresh the page, you will be going to have this. Write a description about yourself, and here I can write some brief description about myself. Okay, so this is how guys you can use text area in HTML forms. If you want to receive some multiple piece of information from your user, you can use this text area. Okay, now one more important attribute I would like to show you, and the name of that attribute is placeholder. Guys, sometimes हमारे यूजर को पता नहीं होता कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पर उनको फिल करनी है. जैसे सपोज करो उनको नहीं पता कि पूरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है. Here what you can use is, here you can use something known as placeholder. Okay, let me show you that what this placeholder attribute will do. It will provide a hint to your user. Let's say abc@gmail.com. Now what this placeholder will do, now this placeholder will work as a hint for your user. इससे user को idea मिल जाएगा कि okay, this is the way he or she need to write his or her email address. Okay, let me save it. And if I refresh the page, you can see a placeholder will be there for you. Okay, और ये placeholder और ये hint कब हट जाएगा? The moment when user start writing his or her email address. आप देख सकते हो कि automatically आपका placeholder remove हो जाएगा. Okay, so guys, placeholder we can use if you want to provide a hint to your user that what kind of an information they are going to insert over there. Okay, so आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस attribute का use करना है placeholder, और यहाँ पर आप hint लिख सकते हो. अब फाइनली यहाँ पर हम एक और एट्रीब्यूट की बात करते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड. इफ यू वांट टू मेक दिस फील्ड अ कंपल्सरी, कि लेट्स से यूजर को नेम डालना ही पड़ेगा. ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज इन your input type or in your input element you can use this attribute named as required. Now required will make it compulsory for a user to enter his or her name. तो जो इंफॉर्मेशन जो आपको यूजर से चाहिए ही चाहिए, for that you can use this placeholder, you can use this attribute named as required. Okay, मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ required. Now what this required will do, let me save it. Okay, let me refresh the page. अब आप ध्यान से देखना कि जब मैं ईमेल नेम और ईमेल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल नहीं कर रहा हूँ, एंड द मोमेंट व्हेन आई क्लिक ऑन this click here to register, we are going to have a pop-up that please fill out this field. Okay, means now HTML will make this field a mandatory field. So let me write my name over there. Okay, अब मैं फिर से click here to register पे क्लिक करता हूँ. अब आप देखो कि अब मेरे को कहाँ पर वार्निंग नजर आ रही है? ईमेल में. So why we are getting this warning that please fill out this field? Because of this attribute named as required. तो गाइस, जो इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि कंपल्सरी है यूजर से लेना, यू कैन यूज दिस एट्रीब्यूट नेम्ड एज रिक्वायर्ड. ओके, सो गाइस यू कैन सी दैट हाउ फन इज टू लर्न HTML forms. Okay, so now search some idea. I am going to give you a task that try to create some different forms. आप एक feedback form बनाओ, try to create a form just like facebook.com, try to create a registration form just like Gmail, or like just like any other login or registration forms. Okay, so you are going to use input type text, email, number, radio, checkbox, select, date, input type text and password, and for button you can use input type is equal to submit. And if you want provide a hint to your user, use this attribute placeholder, and if you want to make this field mandatory, then use this attribute named as required. So that's it for this video guys. In this video we learn about HTML forms.